All sisters stand. Okay, you guys over here, you have a really hard come on, Lonnie. Caroline, can you follow Lonnie? Gentlemen, you guys have to be listening. You're in the wrong place. No, Lonnie, don't go on the stage. Just wait right there. Just wait right there. Yeah, I'm just gonna read right here. Just right here. Now, everybody who's a singer, everybody who's a singer takes one step towards the back of the room. Good. You guys aren't hearing me. Take one step this way. Singers, you should probably be in front of the screen to watch the program. Now, you guys. Check.
I texted you back. I said no. Zero is because there's no way we can do it now. We'll do it later. It is not. Testing, testing. Yep. 1, 2. Do you want us to do it up there or down here? Okay. Barbara, we're coming by you. My side. Well, yeah. Hey, can you see first? I will in a minute. You can leave it on the edge of the... My silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, my silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, silence praise, yet ever speaking the flowing language of the heart. In silence, thy built melodies unceasing, the music you can't tell the track it plays apart. Is there track? I don't know where we are. Here's the deal. We are so loud in the room. Or it sounds so loud, maybe it doesn't matter. No. All I'm trying to communicate is because we're loud, we drown the sound. We do great. That's all.
two turns of introduction. There's 2 turns of introduction. Yes. Do you want to come practice this or not? My silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, my silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, silence wordless, yet ever speaking, the flowing language of the heart. In silence, vibrant melodies unceasing, the music in which our life plays a part. The universal heartbeat, felt and lived. That's so much better. I say 2, and you listen. When it gets pulled far away from your mouth, it starts picking up more and less of you, which is because your voice is so soft. So, Can you show me how close it needs to be? Okay. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Okay. 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 Getting the sound coming through. So this way would be great. And if someone wants to Yeah. Yeah. It's just hard to. Please hear that position will have the song around the clock and everything. Time, and then we move them after, yeah, that's for after the RT. Right. 4 songs in a row. Oh, you're practicing. Sorry, yeah, thanks, Natasha. we need this for Mononosh. You need a mic. I was going to share with you. I don't think that's a good idea. All right, then you bring them both down. I'll bring them both in. Coming on through. Okay. I've got a bunch of that thing. Hi, chorus gals, come through. I think this mic. Is that cool? Can I? Mom. Okay, Baba. Okay, Baba. I'm coming, I'm just trying to. Okay, Baba. Testing, 1 1 testing. Testing, testing. Hello. It's not connected. Hello, hello. There it is. There it is. Yes, 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 yes. We want it to pick up the guitar as well as the voice if it can. Hello, hello. There we are. Hello. Can it also hear the guitar? Every cycle, every age has one truth, one path to show in joining God. Oops. All spiritual systems are but variations on a single theme. Personal annihilation.
structure to evolve holds a problem to be solved. When the conflict is resolved, then the structure will resolve. It's all that simple, you see? Hello. Guitar? That won't affect, I don't think, anything unless it's plugged. Oh, you got it plugged in? Oh, okay, yes. Is it coming through? Okay. Oh, there it is. Whoa. Well, it works. A restructure, but the lights are done. La da dee da 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 da. Then the structure. Mind is the mind, ego mind. I'm weak, just left behind. Bye bye, release your energy. Toward my reality. Can you go to Mona Nashmine? Just wow, so much feedback. So hot. This is the way it is. Hank's voice mic is very hot, and it's a lot of feedback. This is so what? Maybe just when you're Ready? Just when you think all the cards are dealt and you've mastered all you've seen and felt, your ego mind begins to melt. Darn, I was acting so adult. Everything you thought you knew now comes down on top of you. The only thing that you can do is wait until the finale is through. Spiritual students must learn the art of staying together while they're falling apart. Every step means another start. Okay. Sure. We're trying to get used to the room. So the question is, what to do where with do we this? put all this? This is only one song. It's, I don't know, like number 3. I mean, we were going to leave these two things here. Terry. So where do we put this when we're not? We've got a cable. अवतार मेहर बाबा की जय जय। आज का कार्यक्रम अभी हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आज सूफी रिओरिएंटेड ग्रुप से अमेरिका से करीबन 70 से 80 लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो खास उनका प्रोग्राम है। लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करना चाहेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं सूत्र से। तो हम अभी पहले सूत्र गाएंगे, उसके बाद में
जो मुर्शिद साहब है मिस्टर वॉकर, तो मुर्शिद साहब अपना यहाँ पे भाषण देंगे और उस भाषण के बाद जो आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द ये सारे जो उनके कलाकार हैं वो उनका जो कॉन्सर्ट है वो पेश करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम होगा और अंत में पुना सेंटर गाते चलो गाएगा। बस इतना ही आज का पूरा कार्यक्रम है। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 दो वरदान तुम्हारे गुण गाऊं, भजन करत रम जाऊं, भूल जाऊं भवताप सार। कण कण में तुम रमे जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन के मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। वास तुम्हारा हो ये भजन में, वास तुम्हारा हो ये भजन में, भजन रंग भर आए। प्रेमी जन चित चकोर बन कर रस अमृत पी जाए।
eaten by somebody. And Rama was so happy eating those berries. The point I'm making is that our love is full of heart. So if there is any mistake in our welcoming you, please pardon us. However, before we welcome the new Murshid, he has expressed his desire to garland Baba's photographs. So I request Ganesh to guide him to the stage so he can garland Baba's photograph. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you, Mr. Walter. And now I invite the president of our center to welcome Mr. Walter with a bouquet. This is the most traditional way, and this is the way we could think of. Jai Avatar Meher Baba ki Jai, Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, sir. Thank you, sir. When we were walking in the morning together, I had the opportunity to walk with Mr. Walter. And we discussed about Dr. Ghani, and he showed interest in a particular book that Pune Center had published a long time ago. The book is titled 20 Years with Meher Baba, which talks about Ghani's association with Meher Baba. So at the end of the program, we will be offering you that book, sir. Jai Baba. Now I invite Mr. Walter to give his speech that all of you are waiting to hear. Sir. Hello? Jai Baba. Well, it is a real delight to be here with all of you. I just have a few remarks, and we have Prashant, I think, will translate as I go through. I'll wait for him. I'm here. Here, thank you. Well, Jai Meher Baba. Meher Baba's love has brought his American Sufis in the West to his Pune Center family in the East together many, many times. I had the opportunity to come here in 2017, which I think I saw some of you here when I gave a talk on Murshid Khan's service programs, Meher Baba service programs that we have started in America. And I have enjoyed spending a lot of time with Pratap over the years, beginning in 2011, when he was instrumental in our pilgrimage with Murshida at that time.
Of course, our visits here as a group began long before that. And some of my companions here today visited this center alongside Murshida Ivy Deuce in 1969 following Baba's last darshan. They were invited here by your secretary at the time, K.K. Ramakrishnan, to share some songs, including the new American Arti, written by my companion Hank Midland, which Mayor Baba had liked and approved, and we'll hear it in a minute from the choir, who is going to be standing for a few more minutes. मुर्शिद साहब कह रहे हैं कि पश्चिम से उनका यहाँ पे जो आना हुआ है, हम सब लोगों को यहाँ पे भारत देश में और ख़ासकर पूना में मिलने के लिए, तो उसके लिए वो काफ़ी आनंदित है। उनको याद आ रहा है कि 2017 में वो अपने सेंटर में आए थे, और जब इनसे पहले जो मुर्शिदा थी कॉर्नर, तो उन्होंने सर्विस प्रोग्राम्स शुरू किए थे अमेरिका में, तो उसकी जानकारी देने के लिए वो यहाँ पे 2017 में आए हुए थे। उससे पहले 2011 में उनका सारा ग्रुप भारत के दर्शन के लिए, भारत में मेहर बाबा के दर्शन के लिए, समाधि के दर्शन के लिए आया था, और तब उनकी मुलाकात ज़्यादातर हमारे जो पिताजी प्रताप अहिर, उनके साथ उनका संबंध बना है और उसको उन्होंने याद किया। लेकिन उनका कहना है कि सूफी ग्रुप और पूना सेंटर, इनका जो भी नाता है वो काफ़ी पुराना है। 1969 में हमको सबको पता है कि बाबा ने ग्रेट दर्शन अपना शरीर छोड़ने के बाद अप्रैल महीने में जो दिया था, तो उसके लिए उनकी जो मुर्शिदा आईवी ड्यूस तक की वो जब आई हुई थी, तब हमारे सेक्रेटरी रामकृष्णन इनके आमंत्रण पर उनका सारा जो ग्रुप है उन्होंने पहली बार पूना सेंटर में यहाँ पे भेंट दी थी। ये है 1969 की बात, और आज फिर ये सारे लोग हमारे साथ हैं। We were treated when we were here to the music of the wonderful Bhajan Mandali, of course, which Baba so loved. I could sit and listen to Pratap sing for days. Jai Baba. So for more than half a century, whenever our Sufi travelers have come on pilgrimage to Baba's Samadhi, we have also been privileged to pay our respects here at his center in Pune, which my predecessor, Murshida Carol Connor, described as having a spiritual atmosphere sanctified by the Avatar's visits and his loving care. Murshida also noted that Mayor Baba built and strengthened that connection between his Pune Center family in India and his American Sufis over many, many decades. कहते हैं कि जब वो भारत में आए थे, तो पहली बार पूना भजन मंडली का जो भजन प्रोग्राम है उसको उन्होंने सुना और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। बाद में कहते हैं कि अपना जो सेंटर है इसका और उनका जो भी रिलेशनशिप है वो जैसे पुराना है, मैंने पहले कहा, लेकिन उनकी जो पहले वाली मुर्शिदा थी डॉक्टर कॉर्नर, वो हमेशा कहती थी कि यहाँ, और ये बात हम सबको जानना आवश्यक है, उनका कहना था कि पुणे सेंटर में एक आध्यात्मिक वातावरण है जिसको खुद मेहर बाबा ने उसको पवित्र किया है और मेहर बाबा ही उसको जतन कर रहे हैं। तो ये मुर्शिदा कॉर्नर की भावना थी और उसको उन्होंने यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। In the 1940s, Dr. Abdul Ghani, Baba's close companion since childhood, who of course, as you know, was central figure in the formation of the Pune group. Dr. Ghani was also known as the Sufi in Baba's Mandali, and he was instrumental in Baba's creation of Sufism reoriented in America. Baba signed our charter in 1952, and Dr. Ghani's correspondence with Ivy Deuce, who Baba named as his first Murshida or teacher of Sufism, was key to its genesis.
Over the years, Meher Baba has indeed interwoven our stories. When the time came to break ground in 1962, Baba invited one of Murshid Adous's American Sufis to lay the foundation stone. This was Joseph Harb, who was staying in Pune at the time. Mani noted in her family letter that Joseph's participation was expressly wished by Meher Baba. This history, of course, might be very familiar to you, but some of the details in our intersecting stories are fun to pick out and hold up to the light like tiny jewels. याद कर रहे हैं हमारे डॉक्टर घनी साहब को 1940 में जब उनका संपर्क आया था अमेरिका और सूफी ग्रुप के साथ, तो बाबा ने उनको मंडली का सूफी ऐसा कहा था। और सूफीज़म रीओरिएंटेड का जो चार्टर, नया चार्टर जो 1952 में बाबा की अध्यक्षता के नीचे या बाबा की निगरानी के नीचे लिखा गया, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। और सूफीज़म रीओरिएंटेड की जो पहली मुर्शिदा थी जिसको बाबा ने अपॉइंट किया था, वो थी आईवीओ ड्यूस। तो बाबा और सूफीज़म का जो एक अत्यंत करीबी रिश्ता है, वो 1952 से इसको एक बढ़ावा मिला। और वो कहते हैं कि पूना सेंटर का जब यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था, जब यहाँ पे नींव रखी जा रही थी पूना सेंटर की 1962 में, तब बाबा ने जिस व्यक्ति को ये नींव रखने के लिए चुना था, उनका नाम था जोसेफ हाब्स। और वो तब पुणे में रहते थे, लेकिन वो भी एक सूफी थे, सूफी रीओरिएंटेड से कनेक्टेड थे। ये हुआ 1962 में। और मनी ने, जो बाबा की बहन थी, जो फैमिली लेटर्स लिखती थी, उन्होंने अपने पत्र में इसका जिक्र करते हुए किया है कि इट वाज बाबाज एक्सप्रेस्ड विश। ये बाबा की एक खुद की ऐसी इच्छा थी कि जोसेफ हाब्स पूना सेंटर का जो नींव का पत्थर है उसे रखने के लिए जाए। And of course, I also have to mention our relationship with Digambar Gadekar, who came to our sanctuary for its opening. At our inaugural gathering in California, Digambar told us of his family's close association with Meher Baba and how the Pune Baba lovers had met informally at his father's house for many years, where the idea of creating a permanent center for Baba in Pune was born. I had the good fortune to go to Digambar's house with his daughter the last time I was here and had a delicious meal. याद कर रहे दिगंबर गाड़ेकर साहब को, हमने उनको न्योता दिया था, लेकिन उनकी तबीयत, he is not well. We had invited him, but he's not keeping well. Of course. Yes. Well, please send him our love. Sure. He always has our love. We will tell him you remembered him, especially in your speech. तो उनकी भी उन्होंने याद की है कि जब उनका जो सूफी सेंटर की जो नई इमारत थी, उसका जब उद्घाटन हुआ था 2017 में, तो दिगंबर गाड़ेकर यहाँ से, भारत से वहाँ गए थे। और वहाँ पे उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने पूना सेंटर या पूना भजन मंडली की स्थापना किस प्रकार से हुई, उनके घर में 1949 से लेकर कैसे मेहर बाबा के प्रोग्राम हुआ करते थे, इन सभी बातों का उन्होंने अपनी भाषण में जिक्र किया था। और मुर्शिद साहब ये भी याद कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब भारत में आए थे, तब दिगंबर गाड़ेकर जी के साथ उनके घर पे जाकर उन्होंने भोजन का भी आनंद लिया था। My predecessor, Murshida Carroll, on one of her many visits to India, she came on several occasions as a younger woman at the behest of her teachers, Ivy Deuce and James Mackay, and for the first time as Murshida in 2002,
in the company of nearly 200 of her students. She returned again in 2011 and 2012. On several of these visits, Murshida Khanna joined many of you here at the Pune Center, as well as excursions to Baba sites in town, like we did today. I am deeply, deeply honored to gather here with you all once again as the new Murshid of Sufism Reoriented. याद कर रहे हैं उनके पहले जो मुर्शिदा थी डॉक्टर कॉर्नर, तो वो काफ़ी दिनों से काफ़ी दफ़ा उनका भारत में आना हुआ था। उनके पहले जो मुर्शिद थे मकॉय साहब, तो उनके साथ जो ग्रुप आया था तो उसमें कॉर्नर तब एक कहे कि एक जवान युवती थी, तो उनके साथ में उनका कई बार आना हुआ था। 2011 में, फिर 2012 में वो उनके साथ में भारत देश में आई थी, और उसके बाद में जैसे वो मुर्शिदा बन गई उसके बाद भी आई थी। तो अभी मुर्शिद साहब कह रहे हैं कि जैसे वो लोग बाबा के पूना में जो बाबा के स्थल है वो देखने के लिए पैदल गए थे, तो इस बार उन्होंने जो पैदल भ्रमण किया है तो उसके लिए वो काफ़ी आनंदित है और हम सबका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बात पर कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है न्यू मुर्शिद और उन्होंने जो हमारा शुक्रिया अदा किया है, इसके लिए हमें उनका तालियां बजाकर धन्यवाद करना चाहिए। At one of my first meetings with Murshida Khanna, she greeted me with a forceful Jai Baba. The words burst out with all of her love as she spoke to me about my future trips to India. She kept saying to me, "When you go to India," I had never been here at the time. Since then, I have been 6 times. This is my 7th time. Sufism Reoriented belongs to Meher Baba, and so we say Jai Baba with all our love for him and only him. Sufism Reoriented was Meher Baba's creation. It was Meher Baba's idea. जब उनको याद है जब पहली बार मुर्शिदा कॉर्नर से मिले थे तो उन्होंने इतनी जोर से उनको जय बाबा करके उनका स्वागत किया कि जैसे कि ये जो शब्द है उनके सभी अंग प्रत्यंगों से फूट रहा था, ना ही सिर्फ जुबान से लेकिन उनकी सारी देह बोली उनको जय बाबा कह रही थी। और उसके बाद में उन्होंने उनसे कहा कि जब आप भारत जाओगे, तो इनको तो भारत देश का तब कोई पता नहीं था, ना कोई अंदेशा था कि उनको कभी भारत में आना पड़ेगा। लेकिन जब मुर्शिदा ने ये 2-3 बार कहा तो तब से 6 बार भारत देश आए हुए हैं, और ये जो उनका जो दौरा है ये 7वीं बार भारत में आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सब लोग जय बाबा कहते हैं क्योंकि जो सूफी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सूफीज़म ग्रुप है, वो उनकी ये पक्की धारणा है कि ये बाबा का ग्रुप है, बाबा ने बनाया हुआ है और वो सिर्फ मेहर बाबा को समर्पित है। Yeah. Often when I give talks at Baba centers, I am asked about Sufism Reoriented. So very briefly, Meher Baba wrote the charter for his new Sufism in 1952, which he signed with his own hand, one of the very few documents that Meher Baba signed personally. This charter is a blueprint for our shared work in his service. He drew up the Sufi charter in 1952. Baba told Ivy Deuce at the time, "I love Sufism with all of my heart."
Sufism is essentially the path of the heart. Baba said that Sufism is eternal. It's not a religion, it's not a creed, a sect, or an organization. It's simply a path of love to God. And it's always linked to the work of the avatar. In Murshida's words, Sufis are mystics who in each avataric age are drawn irresistibly to the flame of the new avatar and wish to surrender their lives wholly in service to him and to dedicate themselves wholeheartedly to living his new dispensation. Their task is to put his message into daily practice. That's quite deep. तो उन्होंने कहा है, इसकी थोड़ी हमें जानकारी दी है कि 1952 में सूफीज़म का जो चार्टर बना था, जो आपके सामने है, ये बाबा ने खुद बनवाया था। और ऐसे बिरला डॉक्यूमेंट्स है कि जिस पर बाबा ने खुद अपने दस्तखत किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा ने इसके ऊपर अपना दस्तखत अपने हाथों से किया हुआ है। और बाबा ने तब कहा था कि आई लव सूफीज़म, कि मैं सूफीज़म से प्रेम करता हूँ। और बाबा ये भी कहते थे, और इनका भी ये मानना है कि सूफीज़म जो है ये कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, या कोई एक समूह नहीं है। सूफीज़म ये अपने हृदय का पथ है, अपने हृदय तक जाने वाला एक रास्ता है, और इस रास्ते पर कोई भी चल सकता है। और कहते हैं कि सूफीज़म दुनिया को प्रेम सिखाता है, प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम की राह है, वो दुनिया को सिखाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुर्शिदा कौंदर जो थी, उनका ये मानना था, और उन्होंने ये कहा है कि अवतार जब भी कोई भी पृथ्वी पर जब आता है, तो जिस तरह से एक दिए के पास जो पतंग है वो खींचता हुआ चला जाता है, वैसे ही अपने आप अवतार के पास सूफीज़ जो है वो उसके पास खींचे जाते हैं। और अवतार का उस ज़माने का, उस वक्त का, उस काल का जो भी उसका संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में उतारने का, अब उन संदेशों को जीने का वो प्रयास करते हैं। In every avataric age, there are groups we would recognize as Sufis, though they may go by many different names. Their styles of worship may change, but their work is always to help nourish the avatar's message on earth. In this incarnation, Meher Baba said, "I am the greatest Sufi of the past, the present, and the future." In the past, Sufism flourished in the East, bringing forth perfect masters like Rumi and Hafiz and Moinuddin Chishti. Now, Meher Baba has sown a new seed of Sufism in the West, in America, to help bring about the union of East and West in love for God. कहते हैं कि सूफीज़म जो है वो कई सदियों से, कई अवतारों के काल से चलता आ रहा है, और हर एक अवतार के काल में सूफीज़म मौजूद था। जैसे हमारी जो धारणा है कि सूफीज़म मोहम्मद पैगंबर के इस्लाम के साथ शुरू हुआ, तो उनकी ऐसी धारणा नहीं है। वो कहते हैं कि हर एक अवतार के काल में सूफीज़म जो है वो चलता आ रहा है, और अवतार का जो संदेश है, अवतार के जो शब्द है, उनको परिपोषित करने का या उनको व्यवहार में लाने का जो एक बड़ा जिम्मा है, एक बड़ा कार्य है, वो करने का ये हमेशा प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा ने ऐसे कहा था कि आई एम दी ग्रेटेस्ट सूफी, मतलब मैं
दुनिया में अगर सबसे महान सूफी कोई है तो मैं हूँ, मतलब बाबा है। और बाबा ने ये भी कहा था कि मैं सबसे महान सूफी था, मैं हूँ और मैं सबसे महान सूफी रहूँगा। तो इस तरह से ये सूफीज़्म का जो बीज है वो कई अवतारों के काल में बोया गया है। So Meher Baba entrusted his American Sufis with several ongoing responsibilities. One of the big ones is the publication of some of his major works, including God Speaks. He assigned the copyright to Sufism Reoriented, making us the guardians of this great book. कहते हैं कि इस अवतार काल में मेहर बाबा ने सूफिज़्म रीओरिएंटेड को, जिसको बाबा अपना मानते थे, कई खास विशेष जिम्मेदारियां दी थी। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि गॉड स्पीक्स, जो मेहर बाबा की सबसे महान किताब हम मानते हैं, उसका जो एडिटिंग है वो सूफी रीओरिएंटेड ने किया था। उसके जो कॉपीराइट्स है वो बाबा ने इन्हीं के पास रखे थे ताकि इसको कई सदियों तक उसको जतन किया जा सके। Another responsibility came to us only recently and quite by surprise, in the form of a beachfront home in Myrtle Beach, South Carolina, known as Yupon Dunes, named after a local plant that grows in that area. This home had been Elizabeth Patterson's home for many, many years. It's about 8 miles south of the Mayer Spiritual Center in Myrtle Beach. Yupon Dunes has special significance in Meher Baba's story. You may recall that when Baba came to America in 1952, he suffered a serious automobile accident while driving across the continent. Elizabeth was driving the car, and Baba's beloved Mehera was a passenger. All were gravely injured. Baba later affirmed the accident was divinely ordained. Baba, Mehera, and Elizabeth were brought to the Yupon Dunes house to recuperate from the accident. Baba remained there for more than a month, his longest stay in any single location in America. गॉड स्पीक्स के बाद दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो अकस्मात उनके पास आई वो ये थी कि आपने जो चित्र दिखे यहाँ पे, ये जो जगह है ये इसको कहते हैं यूपॉन ड्यून्स। ये अपना मर्टल बीच सेंटर जो है इससे करीबन 8 मील की दूरी पर दक्षिण की दिशा में है। ये एलिजाबेथ का मकान था और इस वास्तु का ये महत्व है कि 1952 में जब मेहर बाबा अमेरिका गए थे और बाबा जब कार यात्रा कर रहे थे, उनके साथ प्रिय मेहरा भी थी, उनकी मनी आंटी थी, मेहरू थी। तो उस कार का, जिसको एलिजाबेथ ड्राइव कर रही थी, चला रही थी, उस कार की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और उसके बाद में जो बाबा को कुछ दिनों के लिए विश्राम आवश्यक था, तो उस विश्राम के लिए बाबा की व्यवस्था जो है, बाबा का जो प्रबंध है, वो इसी घर में किया गया था। अमेरिका में ऐसी एकमात्र जगह है कि जहाँ पे बाबा 1 महीने से ज़्यादा काल रह चुके हैं, इसलिए इस स्थान का इतना महत्व है। अब ये स्थान जब बेचा जा रहा था तब सूफीज़्म ने इसको अभी अपने पास ले लिया है और उसकी सारी देखभाल और उसकी जो निगरानी है, चूँकि ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, अब सूफीज़्म रीओरिएंटेड कर रहा है। Learning of its history in 2010, Murshid Connor tried renting it and discovered that the house could serve as a lovely spiritual retreat, imbued with powerful healing atmosphere and irradiated indelibly with the light of the great Kalki avatar. Then, one day out of the blue, the owners offered to sell Yupon Dunes to Sufism Reoriented, having noticed and appreciated the care
that Murshid's groups had taken with the grounds and the house. We learned from archival correspondence that Baba worked on the draft of the Sufi charter at Yupan Dunes as he recovered from the accident in 1952 for at least half an hour every day. He also worked on the manuscript that would become God Speaks. We learned that Princess Narina Machabeli, one of Baba's closest Western disciples, spent her last years at Yupan Dunes. An historic landmark, this house is a sacred site for everyone, just as his house in Myrtle Beach Center is, or the house in Prague, Oklahoma, that serves as a memorial for his accident. उन्होंने इस घर की और भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमको बताई हैं। कहते हैं कि जब आईवीओ ड्यूस इस घर में गई थी तब उसको पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि इस घर का जो वातावरण है ये एक हीलिंग वातावरण है। मतलब किसी भी आदमी को बिना किसी उपचार के अगर किसी को ठीक ठाक होना है तो ये जो वातावरण है वो उसके लिए काफ़ी पोषक ऐसा वातावरण उनको लगा। फिर उनको ये भी आईवीओ ड्यूस को लगा कि ये वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चारी दिशाओं से मानव के प्रेम बाबा का प्रसारित होता है और इसलिए उन्होंने ये वास्तु खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन यही बात काफ़ी नहीं है क्योंकि इनके लिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेहर बाबा का जो नया चार्टर, सूफिज़्म का जो नया चार्टर लिखा गया उसके ऊपर बाबा ने इसी घर में काफ़ी काम किया था। रोज़ बाबा करीबन आधा घंटा उसके ऊपर काम करते थे इसी घर में। और गॉड स्पीक्स का जो मैन्युस्क्रिप्ट बन रहा था, गॉड स्क्रिप्ट की जो पांडुलिपि बन रही थी, तो उसके ऊपर भी बाबा ने इसी घर में काम किया है। तो इसीलिए ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए यूपॉन ड्यून का जो घर है ये इनको लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए अब इनकी अख्तियारी में है। So as Meher Baba's Sufis, we devote our time to publishing Meher Baba literature, to caring for Meher Baba's history, to producing films about Meher Baba's life, and to striving to live Meher Baba's example in our daily lives. We also devote much of our free time to Murshid O'Connor's service initiatives, which I spoke about last time I was here. These are primarily channeled through two organizations called the White Pony Express and Following Francis. Inspired by St. Francis of Assisi's example of loving service for all humanity, Following Francis now includes ongoing projects in Washington, D.C., Myrtle Beach, South Carolina, Los Angeles, where volunteers are working to improve improve neglected neighborhoods and provide aid to hundreds of children and families. तो सूफिज़्म आज क्या करता है? तो एक तो जैसे उन्होंने हमें बार बार बताया है कि बाबा की जो संदेश है उसको आचरण में लाने का, उसको प्रैक्टिस में लाने का जो एक काम है वो लोग प्रयास करते हैं वो करने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी जो बाबा का साहित्य है, बाबा से जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है उसको पब्लिश करने का काम करते हैं। आपने यहाँ पे अभी देखा वो उपासनी महाराज की जीवनी का एक तस्वीर थी। उपासनी महाराज की जीवनी उन्होंने प्रकाशित की है और बहुत ही सुंदर है। अपने सेंटर में उसकी एक कॉपी भी है। और जो मुर्शिदा कॉर्नर थी उन्होंने जो सर्विस इनिशिएटिव लिए जिसके तहत ये लोग दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक पोनी एक्सप्रेस और दूसरा जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी थे उनके नाम पे। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता है ये मदद का कार्य करते हैं। And the White Pony Express, which is, you see the picture here, it collects surplus food
and gives it to those who need it. And this program, which began with just a couple of volunteers, now has over 400 volunteers, a whole staff delivering surplus food, clothing, toys, books, cash to families in need all over our region in California and beyond. Murshid, any idea why it is called White Pony? White Pony Express. White Pony is the Pony Express in America, in old America, was a mail service delivering mail. It was called the Pony Express. And so in honor of the Kalki avatar, she named it the White Pony Express. Wonderful, wonderful. Good. तो व्हाइट पोनी एक्सप्रेस के बारे में उन्होंने हमें जानकारी थी कि जैसे हमने श्वेत अश्व की कल्पना करते हैं कल की अवतार के संबंध में, और अमेरिका में जो मेल सर्विस हुआ करती थी वो पोनी के ऊपर हुआ करती थी, तो इसका संदर्भ लेके इसको व्हाइट पोनी एक्सप्रेस नाम दिया है इस संस्था को। ये संस्था मर्टल बीच में काम करती है, ये संस्था वॉशिंगटन डीसी में काम करती है, और कई अमेरिका के अन्य शहरों में ये संस्था काम करती है। जैसे किसी के पास कोई सरप्लस यानी ज़्यादा कपड़े हैं, ज़्यादा अन्न है, या ज़्यादा और भी कोई जैसे मेडिसिन्स है, तो इनको जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का ये एक माध्यम है। We also have a school in Walnut Creek where our center is called the Mayor Schools. Some of the Mayor School kids are here. The school was founded by Murshida Ivy Deuce as a school for love, harmony, beauty, and selfless service based on principles of Mayor Baba. Each of these, let me start, I'll just, if you could do that and then I'm going to. Okay. एक स्कूल भी चलाते हैं जिसका नाम है मेहर स्कूल। अभी कुछ इस स्कूल के एक दो बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि उपस्थित हैं उनके ग्रुप के साथ में, और ये जो स्कूल है इसकी जो संकल्पना है वो आईवीओ ड्यूस की थी, और जो चाहती थी कि बाबा का जो एक हार्मनी का, एक समन्वय का जो एक संदेश है, या ड्यूटी यानी अपना धर्म क्या है, धर्म मतलब मैं हिंदू धर्म की बात या मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, तो इसकी आधार पर इसकी शिक्षा देने के लिए ये स्कूल की स्थापना हुई है। So each of these programs, each of these service efforts was born on the belief that we all share one life. As Murshida said, human brotherhood is not something to aspire to, it is the central fact of our existence. These service programs are built on the understanding that in this beautiful world we share, love knows all, does all, and is the most powerful force in the universe. Can I? Thank you. जो एक वन लाइफ यानी सारा जो जीवन है वो एक ही है और सिर्फ एक ही का अस्तित्व है, इस भावना इस धारणा पर आधारित ये उनके कार्य जो है वो चलते रहते हैं। और जो मुर्शिदा कॉर्नर थी वो ये कहा करती थी कि आपसी भाईचारा जो है यानी हम जिसे कहते हैं कि बंधुत्व की भावना, ये कोई एक लक्ष्य नहीं है, वो कहती है कि ये एक हमारे जीवन का या हमारे जीवन की एक सख्त ज़रूरत है, और उसी की तरह उसी की बदौलत इट इज़ एन इसेंशियल फैक्ट कि ये एक बहुत ही ज़रूरी एक वास्तव है जिसके आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए। Since her passing at the age of 80 in April of this year, Murshida Connor has been recognized and honored for this work by many local, state, and national government bodies. So too,
Murshid Aduce's school continues to garner the respect of local community members and families, many of whom had never heard of Meher Baba before coming to the school, but are deeply grateful to have their children attend a school where Baba's love is the priority. ये जो स्कूल की बात हो रही है और अप्रैल 23 में मुर्शिदा कॉर्नर जो है हम सब जानते हैं, वो बाबा के पास चली गई और ये जो पाठशाला जो चलती है अभी, तो उसकी वजह से और उनका जो सर्विस इनिशिएटिव था, इसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर यानी अमेरिका में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको काफ़ी प्रशंसा मिली है। और ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बच्चे हैं इस पाठशाला में जब आते हैं तो उनको बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो अवतार मेहर बाबा का नाम उन्होंने सुना भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको ये प्रतीत होता है कि ये जो पाठशाला है ये थोड़ी अलग है और बाद में फिर वो बाबा के प्रेमी तो नहीं लेकिन कम से कम बाबा के प्रशंसक बन जाते हैं। My own work as a student of Murshida Khanna, and now as her successor, has been to my delight so often in connection with Baba lovers around the world. So I'm thrilled and thankful to celebrate these ties with everyone here and to share our awe and thanks for the beautiful history of our two beautiful centers. Jai Baba. अपने कार्य के बारे में कहते हैं कि मुर्शिदा कॉर्नर के गुजरने के बाद अभी उन्होंने मुर्शिद पद की जिम्मेदारी ली है और चाहते हैं कि विश्व भर के जो बाबा के प्रेमी हैं, मेहर बाबा के प्रेमी, उनको उनके साथ वो एक संबंध बनाए और उनकी ये जो 2 सेंटर्स है अमेरिका में सूफिज़म की, ये जो 2 सुंदर वास्तु है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सर। And I will, just one last thing. The arts are very, very important to our expression of love for God. And music, as I know it is very important to the Pune Center, is also extremely important to we Sufis. And so we have our choir here, and we're going to sing a few songs from our songbook. And we have been looking forward to this for a long time. So, thank you. कहते हैं कि कला जो है, आर्ट, ये प्रेम की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है, माध्यम है। और जिस तरह से भारत देश में और पुणे सेंटर में संगीत एक मेहर बाबा के पास जाने का माध्यम है, उसी तरह जो सूफी ग्रुप है वो भी संगीत को काफ़ी मानते हैं, संगीत का प्रयोग करते हैं और आज हम उसकी एक झांकी यहाँ पे वो हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। We are so much thankful to you, sir. It was a wonderful talk and lot many things to know on the kind of work that you guys are doing. अवतार मेहर बाबा की जय।
is bright. Now we see with eye unveiled your visage of delight, a world of grace, all boundaries erased, your smiling radiant face in each and all. This is no dream in love's endless stream. May we are merged in you. We walk with you and know we are home. This God-made world has always been our own. Every cycle, every age, every avatar and sage has one truth, one path to show. In joining God, you must go. All spiritual systems are but variations on a single theme: personal annihilation. This process happens naturally, not just to saints in history, but, surprise, to you and me. Every structure you evolve holds a problem to be solved. When the conflict is resolved, then the structure will dissolve. The walls of self you built so strong, solidified right and wrong. A nice place to visit, but not for long. So let's sing the chorus of this song. It goes mind, mind, ego, mind. I'm leaving you behind. Bye-bye. Release your energy so I can find reality. In this process, the simple truth is that your intellect goes poof, and your ego's transformed, recombined to join a larger frame of mind. Meher Baba calls this process Manonash, the central subject matter of spirituality, where you learn simultaneously to be and not to be. Manonash means mind destroyed. Your world becomes an empty void. Psychology can't be employed. No ego, no id. You're freed from Freud. Even wise Professor Jung has no archetype for what you've done. Trauma's neurosis, the cupboard's bare. For you, my dear, there's no there. Mind, mind, ego, mind. I'm leaving you behind. Bye-bye. Release your energy so I can find reality. Now, many spiritual students misapprehend that this happens only at the end of one's journey on the spiritual way. But oh no, it happens every day. Just when you think all the cards are dealt and you've mastered all you've seen and felt, then your ego mind begins to melt. Oh, darn, I was acting so adult. Everything you thought you knew now comes down on top of you. The only thing that you can do is wait until the fana is through. Spiritual students must learn the art of staying together while they're falling apart. Every stop means another start, another nudge to awake the heart. Spiritual students must learn the craft of acting sane while they're feeling daft, of staying cool both fore and aft. Though they feel God's giving them the shaft. So why bewail your fate? Why give in to fear or hate? When yourself you annihilate, it's time to celebrate. Mind, mind, ego, mind. I'm leaving
leaving you behind. Bye bye, release your energy. So I can find reality. Bye bye. silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, my silence sings, my emptiness is full, I lack nothing. My silence sings, silence wordless, yet ever speaking the flowing language of the heart. In silence
manifesting truth. My silence sings, refreshing, caressing all living things. Unifying force, my silence sings, embracing all life in the oneness of being. My silence sings, my emptiness is
come from US and given us such a beautiful program. I was just talking to our people. The energy that all these people are putting in their singing is really wonderful. And I remember the words which Pascal Kaplan had once told me. This is a very important point for all of us, for we Indians also, that any work done together has a different effect. Individually, we put something that doesn't make so much of impact, but that togetherness is a different impact, and that affects everybody's heart. We are really very much thankful to you. You have taken so much of trouble to bring such a big group to our center. In fact, I would just like to say a few words that how our relations with the Pune Center has been. Early times when there was the opening of Bairamangala Center, about 150 people must have been there. I am not sure about the figure. But Makai had brought so many people on the request of K.K. Ramakrishnan, who was the secretary of our center, and he has worked for the creation of for the renewal of the Bairamangala Center. And they have obliged by attending that big function. But thereafter, one very thoughtfully, K.K. Ramakrishnan, along with few people, he took all the people to different centers in India, and they had brought so much of books, photos, lockets, and they were lavishly distributing all these among the center people. And that time we always will remember. Thereafter, when Dr. Connor had come here, I still remember that our Madhusudan, the poet, that was during the East-West gathering, Madhusudan had composed a song wherein he had said, we welcome you, O lovers of Meher. That song was sung by our people, and then there was a program given by the Sufis. And thereafter, many a times, there was a reference about the opening of a place in Walnut Creek. And I remember that Murshida had invited me also. But that program was crashing with our birthday functions. And I very politely expressed my inability to go there. And she very much appreciated my role. She said, it is very nice that you have taken you have understood your role in attending the Pune Center, because I was the secretary then, and we used to stage many programs of very young children, very small children. We used to stage such programs, and she appreciated that. I know that you must be very busy in your work. So that program I missed then, but then she appreciated. Really, I cannot talk about you. You have given such a nice whole account of our association with Pune Center. K.K. Ramakrishnan had a personal friendship with Mackay, Dr. Mackay. Personal friendship.
And many times he had told me, he was very much free with me. We used to talk very freely regarding the work of our center. And what he had said is that there was some sort of controversy. I need not tell you about that. But then that time he had told me that Sufi center is the center which is doing a correct Baba work. They are involved themselves in a correct Baba work. That is the Sufi center. And he had that feeling. So today I am really very, very, very much thankful to you. I have no words to thank you. You have put in so much of energy in your singing. So much of energy and so much of chorus singing. It's beautiful. I really will appreciate our friend. I introduced this person. The Aarti, the American Aarti has been composed by him. And the song Mind, Mind. Wonderful, wonderful. His at this his present is so very wonderful. And really, where is that girl who is always managing the program in the front? Yes, she is there. I am just prompted to sing one last song because we are concluding now, isn't it? Aarti prayers they have already sung. Huh? Not repentance, yes, repentance prayer. And then we will sing a popular song of our group, that is Gaate Chalo. You must have heard it in Bairamangala, a group singing, and all of people can, there are simple words, you can join with us. So, repentance prayer. I'll say the repentance prayer in Hindi if you allow me. Can I say in Hindi? Thank you. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और हर एक झूठ, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई हैं, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक
और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करे, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए, और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। आरती आणि गाते चलो। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। काहे पढ़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते
तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ मेहर प्रेमियों के मेले, सदियों तक आते ही चले। मेहर प्रेमियों तुम आते चलो, मेहर नाम तुम गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते। काम करते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, झूठ तजते चलो, झूठ तजते चलो, मेहर धन का खजाना बढ़ाते चलो, मेहर धन का खजाना बढ़ाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो। सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, हंसते गाते चलो, हंसते गाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो। ओ जिसमें मेहर नहीं, ओ जिसमें मेहर नहीं, ओ जिसमें मेहर नहीं, ओ जिसमें मेहर नहीं, वो तो जीवन
प्रेमी जन हो मेहर में समाते चलो, प्रेमी जन हो मेहर में समाते चलो, मधुसूदन मेहर में समाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, 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 मेहर गाते चलो,